Hello YouTube. We are doing the society series, and if I'm not wrong, we are done with the three parts of this subject. And in the first one, we did your fundamentals of society and Indian society. Then we did caste, and then we did your tribe, Indian tribal system or whatever you call it. ठीक है. इसके बाद अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज के लिए, दैट इज योर इंडियन फैमिली सिस्टम. ठीक है. So this is also a fairly important topic. It's very easy. It's just that few terms are there. Those are important. So before continuing with the topic, let me quickly tell you that what are the subtopics that we are going to study right now. Right. So the first thing that is your kinship. So kinship is basically a alternate term that we use in sociology or in society uh, jargons. Right. It is nothing but a family only. Right. So first we'll see the core definition of kinship and what all is there. Then we'll quickly jump to the functions. Right. We'll see the functions of family. Then we'll see classification of family. Right. Then we'll see classification of families. Then we'll see joint family. ठीक है. जॉइंट फैमिली एक बार हो जाए फिर विल सी लाइफ साइकिल ऑफ जॉइंट फैमिली. ठीक है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. एंड देन विल मूव अहेड विथ इमर्जिंग फैमिली फॉर्म्स. ठीक है. इमर्जिंग फॉर्म्स. ठीक है. इमर्जिंग फॉर्म्स. एंड देन विल सी योर one last topic is there, that is your contemporary pressures on family. ठीक है. Contemporary pressures. Okay, so quickly move ahead with the first topic that we are going to deal, that is your core definition of kinship and family. So to define kinship, the one thing that is your uh, keyword that you can say is your social recognition. Right. This social recognition word is very important for the understanding of this topic. So kinship basically refers to the social recognition of relationships based on biological ties or marriage. Right. So now why social recognition is important, let me tell you that you have often seen that in a society, if two people are engaged in a sexual or biological relation, the society often see them as a taboo. Right. If the both the couples are not in a or not married, ठीक है, तो वो टैबू की तरह देखते हैं उनको अगर उनके बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशन है. बट हैव यू एवर सीन सोसाइटी कॉलिंग अ मैरिड कपल अ टैबू? नो. राइट. Why they don't call it a taboo? Because that married relationship has got a social recognition. So in a society, to call a group a kinship or a family, that social recognition of relationship is very important. Now that this social relationship can be in two uh, parts. Right. One is your blood ties. ठीक है. So if there are parent and children relation, ठीक है, parent and children relation, so this is acceptable. There is no problem in this. In the society this relation is acceptable, parent and children relation. Right. Another relation that is socially recognized, that is your sibling. What is not very much socially recognized, your live-in relationships. ठीक है. Although it has got some legal approvals, and it is not also a criminal activity. ठीक है. And in some parts of the country it has also got your legal sanction, but it is not very much socially recognized. ठीक है. तो अगर आपके सोसाइटी में कोई लिव इन रिलेशन में रह रहा होगा तो आप देखोगे कि आप भले उसको ना जज करो बट बाकी सोसाइटी उसको डेफिनेटली जज करेगी. राइट. ओके. सो आफ्टर ब्लड टाइज देयर इज योर मैरिज टाइज. ठीक है. नाउ मैरिज टाइज इज देयर, दैट इज हस्बैंड वाइफ. तो कपल लिख सकते हैं हम, हस्बैंड वाइफ, स्पाउस, वट एवर यू कॉल इट. नाउ दिस ब्लड टाइज, जो ये वाला पार्ट है, इसके लिए एक दूसरा वर्ड यूज होता है, दैट इज योर कॉन्सैंग्विनिटी. ठीक है. कॉन्सैंग्विनिटी. इफ यू आर ए सोशियोलॉजी ऑप्शनल स्टूडेंट, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दिस.
ठीक है, और एक मैरिज टाइज में ही हो गया इसका अफाइनल होता है, तो हम एफिनिटी या अफाइनल कुछ भी लिख सकते हैं उसमें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो दिस इज ब्रॉडली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ किनशिप, एंड आई वाज गोइंग अ लिटिल बिट स्लो here because it's the introduction of the topic, and let's now quickly cover the topics that are relevant for exam, and we'll focus on the keywords so that we can write answers. Okay, we don't need to explain someone, right? So what is family? Now family is again a small group of people, ठीक है, who are together bound by kinship ties, ये बोल सकते हैं हम कि family is a group of people, ठीक है, they are bound together by kinship ties, ठीक है, now they are living together, they are also sharing economic and emotional life, ठीक है, living together, economic support, emotional support, all these are there, ठीक है. Now family is the most primary and universal social institution, ठीक है, मोस्ट प्राइमरी, बिकॉज इवन इन सोशियोलॉजी यू स्टडी दिस दैट द कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी इंस्टीट्यूशन फैमिली, ठीक है, सबसे पहले अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स लैंग्वेज, वैल्यू, सोशल रोल्स एंड आइडेंटिटी, ऑल दिस हैपन इन द सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, ठीक है, ओके. Next, if we quickly move to the core functions of family, so let's talk about the functions of family, because this is something we have to write in the answer. So first protection that we call, the first function that we call is your protection, ठीक है, तो it definitely protects you from all the social evils like the physical care हो गया, कोई risks हो गया, कुछ भी हो गया, तो family is your protection, ठीक है. Second is your psychological, ठीक है, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सोसाइटी, साइकोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है, इमोशनल केयर, अफेक्शन, ऑल दोज थिंग्स. थर्ड इज योर इकोनॉमिक फंक्शन, like right now I am only dependent on my parents, I am not earning anything, so again that is also a function that so the family is playing, right? Fourth is your बायोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके तो आते नहीं है हम, ठीक है, भले इसके बारे में बात करना टैबू हो, बट फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता है ना हमारा, ठीक है, एनीवे. फिफ्थ इज योर रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड बियरिंग, अगेन यू कैन कंसिडर दिस एज biologically in the biological function also, but again you can explicitly write also, because this is the core function of a family, right? Okay. Next, if we move to the classification of family, okay, now this is something very important that we can have a question on, or we can use this very well in an answer, ठीक है. तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे करेंगे, ठीक है. सबसे पहले जो क्राइटेरिया हम रखेंगे दैट इज योर साइज. नाउ साइज के बेसिस पे जब हमें फैमिली को क्लासिफाई करना होगा, द फर्स्ट फैमिली दैट विल टॉक अबाउट इज न्यूक्लियर फैमिली. Now in nuclear family, there are only two types of people. One is your parents and other is your unmarried children. Like my family is a nuclear family. I have my parents, ma, papa, and I am the unmarried child here. ठीक है, नॉट इवन चिल्ड्रन, ओनली चाइल्ड, ठीक है. सो दिस थ्री पीपल इज योर न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है. नाउ दिस इज इंक्रीजिंगली डोमिनेट इन अर्बन एरियाज मोस्टली, ठीक है, बिकॉज वो लोग मूव करते हैं अर्बन एरियाज में फॉर जॉब, ऑक्यूपेशन, वट एवर यू कॉल, बट विलेज एरियाज में ये सब रेयरली दिखता है, ठीक है. इट्स नॉट दैट कि होता ही नहीं है, ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट इज योर जॉइंट फैमिली. सो न्यूक्लियर हो गया, जॉइंट हो गया. दीज टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज आर ऑन द बेसिस ऑफ योर साइज, ठीक है. नाउ देयर आर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट फैमिली दैट विल डील लेटर, ठीक है. ओके, नाउ after we are done with the size classification, then we'll move to post marital residence, ठीक है. This is also a criteria to understand the classification of family. So post marital residence, now post marital relation के context में the first that is very prevalent in our society, that is your patrilocal, ठीक है. Most of India sees this. In patrilocal family what happens is your wife moves to husband's household, ठीक है. This is historically dominant in India, right? Second is your matrilocal. Now this is not absent in India, but this is very rare, ठीक है. In this kind of a family system, husband lives with wife's family, ठीक है, common in matrilineal societies. So for example, there is your Khasi tribe, ठीक है. Khasi tribes, in Khasi tribes this is very common thing, ठीक है. Another is your neolocal. Now this is very common these days. Neolocal में क्या होता है, couple establishes an independent home,
ठीक है, इंक्रीजिंगली कॉमन इन अर्बन एंड सैलरीड प्रोफेशनल, ठीक है, इवन माई फैमिली इज काइंड ऑफ न्यूलोकल ओनली, ठीक है, इट्स नॉट पैट्रिलोकल, इट्स नॉट मैट्रिलोकल, वी थ्री पीपल आर रिसाइडिंग टुगेदर एंड इट इज बाई साइज इट इज अ न्यूक्लियर फैमिली, बाई पोस्ट मैरिटल रेसिडेंस इट इज अ न्यूलोकल फैमिली, ठीक है। आफ्टर आफ्टर पोस्ट मैरिटल वी कैन ऑल्सो सी बाई डिसेंट, ठीक है, डिसेंट इज बेसिकली जो वंश बोलते हैं ना, वंश, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट वेरी गुड विथ हिंदी, ठीक है, तो बाय डिसेंट इसमें जो आपका पहला क्राइटेरिया आता है दैट इज योर पैट्रीलीनियल, ठीक है ना। व्हाट इज पैट्रीलिनियल? इट इज बेसिकली लीनियज और इनहेरिटेंस, यू कैन से दैट फॉलो द मेल लाइन, ठीक है, जैसे जैसे बोलते हैं ना कि वंश को आगे बढ़ाएगा तो वो अपना दादाजी का, फिर उसके पापा का, मतलब बेसिकली जो पेट्रियार्की जो हमारे यहाँ पे प्रिवेलेंट है उसी का ये डिसेंट वाला एंगल है, ठीक है। अनदर इज योर मैट्रिलिनियल, ठीक है, मतलब इसमें बेसिकली मम्मी के साइड से वो फैमिली ट्री चलता है, ठीक है, जो जब फैमिली ट्री ड्रॉ होता है तो हमारे सोसाइटी में मोस्टली वो पापा के साइड से ड्रॉ होता है, राइट। सो दिस इज योर, नाउ यू कैन राइट एन एग्जांपल अगेन, और खासी ऑफ मेघालय जो मैंने मैट्री लोकल में बोला था, ठीक है, सो दैट इज योर मैट्री, अगेन एग्जांपल ऑफ मैट्री लीनियल टू खासी, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार लिख ही देता हूँ, खासी, ठीक है, मेघालय, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज द डिटेल ऑफ जॉइंट फैमिली, ठीक है, सिंस न्यूक्लियर फैमिली इज वेरी सिंपल फैमिली, इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल में कुछ क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, कुछ आंसर भी नहीं बनेगा, बट फॉर जॉइंट फैमिली वी कैन हैव सम गुड पॉइंटर्स, ठीक है। नाउ सबसे पहले तो जॉइंट फैमिली क्या है, क्या अगर अगर सिर्फ दो भाई आपस में रह रहे हैं साथ में तो जॉइंट फैमिली होगा? नो। सो देयर इज सम फाइव key characteristics that are there, so and those define if something is if a family is a joint family or not, ठीक है। So it must be three or more generations, ठीक है, थ्री और मोर जनरेशन इज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंटर। सेकेंड इज योर कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉमन ओनरशिप हैज टू बी देयर, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल शुड नॉट हैव सेपरेट क्लेम्स ऑन द प्रॉपर्टी, राइट, ओके। थर्ड इज योर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कलेक्टिव डिसीजन, ठीक है। Now this decision is again taken with the blessings of patriarchy, it is taken by eldest male of the family, ठीक है, okay। Fourth is your shared responsibilities. Now this is a very good side of a joint family, shared responsibilities, it is basically, let's say कि इतने सारे लोग होंगे फैमिली में तो कोई चाइल्ड को देख लेगा, कोई एल्डर को केयर कर लेगा, कोई रिचुअल ऑब्जर्वेंस की चीजें कर लेंगी, कोई एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो जाएगा, कोई बाहर जाके कोई सैलरीड जॉब कर लेगा, सो दिस इज गुड साइड ऑफ joint family, ठीक है। Now this is also another keyword that we can write is there is a sense of we feeling in a joint family, like it's very rare that you get bored in a joint family, ठीक है, आपको वो lonely feeling नहीं आता है, आपका mental health मतलब I'm not I can't generalize this because बहुत लोगों का joint family में ही mental health खराब होता है, especially for women because women are historically suppressed in a joint family setting, so if you do a social experiment, like if you ask your friends, you will notice one thing that most women are against joint family, they don't want that because they have been living there in for the last 20 years or 25 years and they have realized that this is the worst thing that they can go through, ठीक है। So I'm not saying that it is a generalized thing that all joint families are very healthy, but yeah, there are some good aspects, there are some bad aspects. So this is the five criteria that define joint family, and now we'll talk about the functions of a joint family, ठीक है ना। फंक्शंस आर वेरी मच ऑब्वियस, लाइक इट विल प्रोवाइड अ सोशल सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि let's take a child of like a class who is studying in class 6 7, अगर अगर बाहर में सोसाइटी को पता है कि ये जो लड़का है या लड़की है ये जॉइंट फैमिली में रहता है, जिस जॉइंट फैमिली में 4 5 भाई है, ठीक है, सो इट्स वेरी अनलाइकली कि उस बच्चे को कोई तंग करेगा, राइट, उस बच्चे को कोई बुली करेगा, उस बच्चे को कोई अनॉय करेगा, दैट इज वेरी रेयर, ठीक है।
So this is your social security. Another is your economic security. ना economic security कैसे कि let's say कि एक joint family है जिसमें से दो लोग नहीं कमा रहे हैं at present and दो लोग कमा रहे हैं, तो उनका भी मतलब खाना पीना का हो जाएगा काम, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट इज योर कॉमन चूल्हा, ठीक है, बेसिकली कॉमन किचन इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जॉइंट फैमिली. इफ यू आर लिविंग अंडर द सेम रूफ एंड नॉट डज नॉट हैव अ कॉमन किचन, then that is not probably the traditional joint family that we're talking here about. ठीक है. थर्ड इज योर कल्चरल कंटिन्यूटी. नाउ अब अगर मान लो जैसे मेरा फैमिली है, ठीक है, अब मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब, पापा रिटायर हो चुके हैं बट मम्मी जॉब करती है, ठीक है. सो अब हमारे घर पे कल्चरल कंटिन्यूटी करने वाला कोई ऐसे खाली आदमी कोई बैठा हुआ नहीं है घर पे. बट अगर लेट्स से कि ये जॉइंट फैमिली होता है या यहाँ पे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर होते, तो वो बच्चों को लेके, मतलब अब बच्चे तो है नहीं घर पे, बट स्टिल यू गेट माई पॉइंट राइट, कि वो बैठ के बताते कि क्या होता था कल्चरल में, कुछ कहानी सुनाते कुछ. इट्स नॉट दैट कि मम्मी पापा नहीं सुना सकते हैं, बट जनरली मम्मी पापा थोड़ा बिजी रहते हैं काम करने में, दे आर इन देयर यंग एज, बट द ग्रैंड पेरेंट्स दे जनरली स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम विद ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है. सो दिस इज द थिंग. फोर्थ इज योर डिवीजन ऑफ लेबर. नाउ दैट दिस इज ऑब्वियस कि हम यहाँ पे भी बात किए कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिवीजन ऑफ लेबर इज समथिंग दैट इज कॉमन ओनली, ठीक है. फिफ्थ इज योर इमोशनल सपोर्ट. नाउ अगेन दिस इज अ कॉमन पॉइंट, ठीक है. सो once you understand the concept, you it's very easy to write the pointers, right? So now quickly talk about the quickly address the elephant in the room, that is your joint family का merit and demerit, ठीक है. नाउ यू सी देयर आर लॉट ऑफ मेरिट एंड डिमेरिट, ठीक है. सबसे पहले मेरिट का ही बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो फंक्शन है वही तो मेरिट है, ठीक है. सो ऑब्वियस है. सो इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो गया, एक सोशल सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, कल्चरल हो गया, ठीक है. सो लेट्स इग्नोर द मेरिट साइड बिकॉज यू कैन इजीली राइट द मेरिट साइड. लेट्स टॉक अबाउट द डीमेरिट साइड. नाउ डीमेरिट साइड इज योर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी इज समथिंग दैट इज योर बोथ मेरिट एंड बोथ एंड ऑल्सो डीमेरिट. लाइक फॉर एग्जाम्पल द it is a merit for the unemployed person but it is a demerit for the employed person because that employed person has to bear the burden of those non earning member, ठीक है. तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल डिपेंडेंसी लिख सकते हो. जस्ट फ्रेम द सेंटेंस इन अ वे दैट लुक्स लाइक अ डिमेरिट, ठीक है. वरना तो मतलब इट विल बी वेरी गुड इफ यू कैन राइट इट लाइक कि हम एक कॉमन पॉइंट लिखे एंड उसी पॉइंट का मेरिट भी साइड भी बताए, डिमेरिट साइड भी बताए, ठीक है. इट लुक्स गुड आई थिंक, ठीक है. Again, this is not an advice because I'm not credible to give you advice. It's just that what I think with myself कि भाई अगर मुझे मेंस लिखने मिलेगा जब, तब मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है. So this is my understanding. You can listen to toppers for greater understanding. I'm just discussing the things that we can follow, ठीक है. Again, the next is your limited पर्सनल प्राइवेसी, ठीक है. ये तो अब आपको पता ही होगा अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो कि प्राइवेसी की तो लगी पड़ी रहती है उसमें, ठीक है. ऐसी इंडियन फैमिली में इंडियन फैमिलीज में प्राइवेसी का कुछ उतना है नहीं इम्पोर्टेंस, ठीक है. ओके. नाउ अगेन अनदर थिंग इज योर कन्फ्लिक्ट अक्रॉस जनरेशन. नाउ अब देखो एक फैमिली में अगर 3 जनरेशन रह रही है, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स है, फिर पेरेंट्स है, फिर ग्रैंड चाइल्ड है, तो आप सोच सकते हो कि किस तरह का कन्फ्लिक्ट हो सकती है. मैं तो हमारे घर पे 3 जने, इसी में इतना ज्यादा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है. मतलब आप सोच को नहीं बदल सकते हो ना. द वे आई लुक एट थिंग्स इज वेरी वेरी डिफरेंट देन व्हाट माय ग्रैंड पेरेंट्स लुक एट थिंग्स, ठीक है. So this is a very important demerit. Now another is your suppression of individual choice. Now again that is something especially for women, ठीक है, कि वो उनका किस घर में शादी होगा, वो लव मैरिज नहीं कर सकती है, कास्ट में शादी करना होगा, रिलीजन में शादी करना होगा, ठीक है. तो सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल चॉइस, ठीक है, इंडिविजुअलिटी इज सप्रेस्ड बाय कलेक्टिविज्म, ठीक है. ओके. नाउ कितना हो गया, 1 2 3 4 5th. ओके. वन मोर थिंग, व्हेन आई वाज एनरोल्ड इन सारथी, सो मुदित जैन सर यूज्ड टू टेल अस कि हमेशा 1 2 करके पॉइंट लिखा करो. इससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बनता है एग्जामिनर पे कि दैट यू हैव ऑलरेडी रिटन 5 पॉइंट्स, ठीक है. तो वो कई बार ऐसा होता होगा, मतलब मुदित सर यूज्ड टू से कि कई बार ऐसा होता होगा कि वो पूरा पूरा पॉइंट पढ़ेगा भी नहीं, वो देखेगा कि अच्छा डीमेरिट में 5 पॉइंट, मेरिट में 5 पॉइंट, तो 10 पॉइंट इस बंदे ने दिया है तो कुछ तो लिखा ही होगा. अब गाने का लिरिक्स लिख के तो आएगा नहीं, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट वी शुड फॉलो. फिफ्थ इज योर
unequal burden on women. Now this is something that I was talking about, unequal burden on women. Like hardly any woman is there who likes joint family, ठीक है, because मतलब there must be women, because that those joint families must be healthy joint families, ठीक है. So this is the thing. Now again women may be क्लासिफिकेशन है कि वो वोमेन उस घर की वोमेन है या वो डॉटर इन लॉ है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर अगर लेट्स से कि ए और बी दोनों भाई है, ठीक है, इनका बहन भी है सी, ठीक है, लेट्स स्क्वायर इट. अब सी को तो इक्वल रेस्पेक्ट मिल रहा है घर पे, बट ए और बी का जो डी और ई आपका वो है, वाइफ है, ठीक है, स्पाउस है, इनको नहीं मिल रहा इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है. सो बेसिकली अनइक्वल बर्डन ऑन वुमेन, स्पेशली डॉटर्स इन लॉ, ठीक है. सो दिस इज समथिंग important. Now 5 points are enough. Let's quickly move to the next topic, that is subtopic, that is your life cycle. Now what is life cycle? This is a very important interesting thing that I found of a coaching note, ठीक है, from a coaching note, life cycle of a joint family. Now let's see what is this, ठीक है. So life cycle is basically, in this subtopic they are talking about the factors that are influencing the life cycle. Now what are those factors? Life cycle basically कि कितना दिन वो चलेगा वो जॉइंट फैमिली, ठीक है. मतलब लेट्स से कि 10 साल पहले कोई जॉइंट फैमिली में रहता था बट अब नहीं रहता है, तो कौन कौन सा फैक्टर्स ऐसा हो गया जो कि वो लाइफ साइकिल को इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो सबसे पहला जो एक फैक्टर है दैट इज योर इकोनॉमिक फैक्टर. ना इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर वी कैन राइट योर इकोनॉमिक फैक्टर के, इसको हम ए कर देते हैं. इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ठीक है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी. Now what is your occupational mobility? It is basically the migration for education, employment or business, ठीक है. This encourages the formation of separate household, ठीक है. This is your occupational mobility. Second is your urbanization. Now our next topic will be after we are done with this topic we'll have a marriage topic, and then we'll have urbanization. So urbanization is another one factor, ठीक है. Third is your income and economic dependence. Now it is again your occupational mobility kind of thing, but if you are short of pointers then you can write this, or you can ignore also this if you have plenty of points, ठीक है. Fourth is your inheritance, ठीक है. Now division of ancestral property can lead to disputes, ठीक है. This also result in a breakup of joint families. For example, when grandparents are no more there, there are chances of division of ancestral property, and that can lead to disputes, and that can result into breakup of joint families, ठीक है. It is a must right thing, ठीक है. Fifth is your the changing economic functions, ठीक है, changing economic functions, ठीक है. अब ये क्या है? चेंजिंग इकोनॉमिक फंक्शन इज बेसिकली द डिक्लाइन ऑफ फैमिली बेस्ड ऑक्यूपेशन, ठीक है. पहले क्या होता था कि मतलब फैमिली बिजनेस वाज वेरी कॉमन, ठीक है, कुछ भी छोटा से बड़ा बिजनेस हो, बट नाउ द थिंग इज कि सब कोई अलग अलग अपना इनकम कर रहा है. तो सिंस दे आर अर्निंग सेपरेटली दे लाइक टू लिव सेपरेटली, ठीक है, बिकॉज द मोमेंट you are doing job in different places, your mindset is built differently, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कोई अगर अपना ही लोकेलिटी में कोई जॉब कर रहा है एंड एज कंपेयर टू कोई बाहर बड़े शहर में काम कर रहा है, तो दोनों का मेंटेलिटी मैच नहीं हो पाएगा, दोनों के चाइल्ड की मेंटेलिटी मैच नहीं हो पाएंगे, और फिर साथ में रहना पॉसिबल नहीं होगा. सो दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है. अनदर काइंड ऑफ फैक्टर्स दैट विल बी सीइंग इज योर सोशल फैक्टर. now social factor first is your respect for elders, ठीक है. now this is something this is like traditional norms emphasizing authority of elders encourage family cohesion, ठीक है. so this is another positive side, that is your influencing the life cycle, ठीक है. respect for elders. Now it's not necessary that the factors will be negative, ठीक है, factors can be positive as well. Second is your collectivities values, ठीक है, collectivist values. Now these emphasis on cooperation, mutual support, shared responsibilities, and these promotes joint family, ठीक है. Third is your kinship bonds, ठीक है. Now what is kinship bonds? like these are your इमोशनल टाइज, कि आप अगर अकेले अलग रहना चाहो भी तो आपका इमोशनल एक
वो है इमोशनल, एक क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल एक एफिनिटी है, कुछ भी है, ठीक है, कि आप अलग नहीं रह सकते हो, ठीक है। बहुत लोगों को होम सिकनेस होता है, लाइक होम सिकनेस इज अ गुड वर्ड, बट इट इज साउंडिंग अ बिट नेगेटिव, ठीक है। बहुत लोगों को मतलब एजुकेशन पर्पज से भी बाहर जाने में उनको मन नहीं होता, वो बोलते हैं कि हम अपने शहर पे घर पे रह के पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, अनदर इज योर मैरिज, ठीक है। सो मैरिज इज समथिंग दैट इज कीपिंग द फैमिली जॉइंट, ठीक है। बेसिकली अगर अगर फैमिली, अगर मान लो मैरिज ना हो तो जो आपका इंडिविजुअल्स है वो मोस्टली बाहर ही बाहर रहेंगे, ठीक है। सो दीज आर सम योर पॉइंटर्स फॉर द सोशल फैक्टर्स, ठीक है। ओके, विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर इमर्जिंग, no, this is very interesting topic, ठीक है। इमर्जिंग फैमिली फॉर्म्स. Now, what are the emerging family forms? Let's quickly look at this. Now, these family forms are beyond joint and nuclear. ठीक है, हमने joint देख लिया, हमने nuclear देख लिया, अब कुछ नई तरीके की families आ रही है। सबसे पहले is DINK, ठीक है, DINK, DINK. What is DINK? DINK is your dual income, no kids, ठीक है, dual income, no kids, ठीक है। मतलब हस्बैंड वाइफ कपल दोनों अर्न करेंगे बट देयर विल बी नो किड्स, ठीक है। अब ये सब तो अर्बन एडुकेटेड और करियर ओरिएंटेड फैक्टर्स में ही ये सब पॉसिबल है, आपको विलेज में तो डिंक फैमिली नहीं मिलेगा अब, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। नाउ व्हाट आर द ड्राइवर्स बिटवीन डिंक फैमिलीज? तो एक तो इकोनॉमिक फैक्टर हर जगह ही होगा, ठीक है, हाई कॉस्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद करियर प्रायोरिटीज भी होगा, ठीक है, कि लोग अपने करियर को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। थर्ड इज योर वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, बहुत लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस करना होता है कि अगर पूरा दिन काम करने के बाद फिर बच्चे संभालने हो, दैट इज नॉट समथिंग एवरीबडी डिजायर, ठीक है। फोर्थ इज योर शिफ्ट टुवर्ड इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, या फिर इंडिविजुअलिज्म भी लिख सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल फुलफिलमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट डिपेंड्स ऑन द स्पेस दैट यू आर लेफ्ट विथ इन द कॉपी, ठीक है। So individualism is something that is another driver. Okay, next quickly move to another form of emerging families, that is your single parent household, ठीक है। Let's see what is single parent household. Now, main reasons of these kind of family is basically is your divorce, separation, abandonment और widowhood, ठीक है। this is not something मतलब normal तो उसको नहीं बोलेंगे, but this is not something that is let's say कि by choice, ठीक है। मतलब divorce is also by choice to some extent, but there are some forceful factors behind a divorce or separation, and obviously in widowhood there is a forceful factor. So this is your सिंगल पेरेंट काइंड ऑफ, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस तो हो गए, मतलब जो जो जॉइंट फैमिली या फिर लेट्स से कि न्यूक्लियर फैमिली में जो जो आपका पॉजिटिव साइड से, वो सब अब सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड का नेगेटिव साइड होगा कि इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी होगा, चाइल्ड केयर का बर्डन होगा, सोशल स्टिग्मा तो होगा ही होगा, ठीक है। जिस जिस कंट्री में सती चलता था उस कंट्री में सिंगल पेरेंटहुड कहाँ से ही चल पाएगा, ठीक है। एनीवे, सो थर्ड इज योर वीकेंड फैमिलीज। नाउ वीकेंड फैमिलीज, मतलब इनके बारे में बात करना काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। सो इसमें क्या हो रहा है कि वीकेंड फैमिलीज में हम पूरा वीक तो अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है। बेसिकली family members live in different cities during the week and meet mostly on weekends only, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू कैन राइट। इवन माय कजन ब्रदर, ठीक है, वो और भाभी बेसिकली, तो वो दोनों अलग अलग शहर पे जॉब करते हैं एंड दे मीट ओनली ऑन वीकेंड्स, ठीक है। सो दिस इज समथिंग मतलब अभी अर्बन सेटिंग्स में ये सब दिखता है कॉमन, ठीक है। फोर्थ इज योर ट्रांसनेशनल फैमिलीज। अगेन एक तो कोई विदेश में रहता है, ठीक है, अगेन दिस इज ऑल्सो वन थिंग, ठीक है। सो दीज आर सम इमर्जिंग फॉर्म, ठीक है। ओके, नाउ विल सी one last subtopic in the topic of family, that is your contemporary pressures, and with this we'll be covering most of the important dimension on family कि अगर फैमिली पे क्वेश्चन आता है, मोस्टली 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं सोसाइटी के, ठीक है। तो अगर फैमिली पे एक क्वेश्चन आता है
so have discussed sufficient amount of dimension, adequate amount of dimension जिससे हम एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं. ठीक है. So contemporary pressures. Now what are contemporary pressures on family? Contemporary pressures में अगर हम सबसे पहला देखें, let's say work from home. ठीक है ना. वर्क फ्रॉम होम का दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. एक तो होगा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. ठीक है. एक हो जाएगा आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट, दूसरा हो जाएगा आपका नेगेटिव एस्पेक्ट. नाउ व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट? लेट्स क्विकली आई विल जस्ट गो थ्रू. ठीक है. सबसे पहले योर फिजिकल प्रेजेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा घर पे. ठीक है. देयर विल बी वर्क लाइफ बैलेंस. ठीक है. फ्लेक्सिबल होगा. ठीक है. और कुछ वुमेन को जिनको फोर्सफुली अपना हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखना होता है, ठीक है, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि वो घर का भी काम संभाल लेंगे और फिर वो काम भी कर लेंगे, एक इकोनॉमिक अर्निंग भी हो जाएगी. बट देयर आर नेगेटिव इम्पैक्ट्स कि अगर हम पूरा टाइम 24/7 अगर फैमिली के साथ रह रहे हैं तो एक मेंटल फटीग होता है. ठीक है. बिकॉज excess of anything is not good, right? So 24/7 रहना is not something desirable, क्योंकि अगर आप पूरा दिन बाहर रहते हो और फिर बस रात को शाम को घर आते हो तो फिर आप में वो एनर्जी नहीं बचती कि झगड़ा करे या फिर कंफ्लिक्ट करे या फिर कुछ भी वो सब हो, किच 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 किच, ये सब नहीं होता है. बट आप पूरा पूरा दिन घर पे पड़े रहोगे तो ऑब्वियसली आपको इनफ एनर्जी और टाइम मिलेगा कि हम फालतू की चीज़ों में एंगेज हो जाए. ठीक है. ओके. नाउ इन नेगेटिव साइड इज अगेन वुमेन का डबल बर्डन हो जाता है. एक साइड में तो दिस इज गुड कि हाँ चलो उनको, बट दिस इज ऑल्सो बैड ना कि उनको जबरदस्ती, मतलब दे हैव मोर कमिटमेंट्स टू हाउस होल्ड देन अ मेल मेंबर. ठीक है. सो अगेन दिस इज समथिंग. ओके. थर्ड इज योर लाइक इससे बहुत ज़्यादा आपका वर्क स्पेस का भी इशू हो सकता है. सो इसको क्या लिख सकते हैं? कंजेस्टेड लिख सकते हैं या फिर क्रैम्प्ड लिख सकते हैं. ठीक है. कि बहुत ज़्यादा आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट वर्ड फॉर दिस. ठीक है. बट यू हैव गॉट माई पॉइंट कि एक जगह पे बहुत लोग हो जाते हैं तो फिर सबको अपना आइसोलेशन वर्क स्पेस नहीं मिल पाता है. कोई किसी को मीटिंग करना है और किसी को पढ़ाई करना है, तो ऑल दिस थिंग्स आर नॉट वेरी feasible in a work from home situation. ठीक है. सो द ओवरऑल द impact of work from home is uneven basically. ठीक है. It depends on class, gender, roles and living conditions. ठीक है. Either if it will be an opportunity or a burden. So in fact in every aspect of society something or the other is uneven only, and it depends on class, gender, roles and living condition that if it is an opportunity or it is a burden. ठीक है. Okay. Next is your केयर क्राइसिस. ठीक है. अब क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली और एक जॉइंट फैमिली का लाइफ साइकिल कम हो रहा है, सो दिस शिफ्ट फ्रॉम जॉइंट टू न्यूक्लियर फैमिलीज हैज क्रिएटेड अ गैप इन एल्डरली केयर. ठीक है. विच इंडिया सिस्टम इज नॉट फुल्ली प्रिपेयर टू हैंडल. ठीक है. अर्लियर एल्डर्स वर सपोर्टेड विद इन द फैमिली बट नाउ मेनी फेस न्यू चैलेंजेस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आइसोलेशन इज देयर, लोनलीनेस इज देयर. ठीक है. एम्प्टीनेस सिंड्रोम करके एक अच्छा कीवर्ड है. ठीक है. एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम. अब उनके नेस्ट में और कुछ है नहीं ना, तो उनको बहुत खाली खाली सा लगता है. ठीक है. ऑल्सो they are financially dependent to their children. ठीक है. Also they must be vulnerable to crime also, because when people get to know that two elderly people are living alone, it's very possible that they are being attacked or some kind of fraud is being done to them. ठीक है. So these are some things. ठीक है. Again is your a digital shift is something is there. ठीक है. And children are also getting impacted for this, because the primary socialization function of the family is about teaching language, values, social norms, emotional skills. ठीक है. All these are being deeply affected by the digital technology. The issue is not just screen time. ठीक है. But a bigger change is how children build identity, relationships and social skills. ठीक है. So these are some कंटेम्प्रेरी प्रेशर्स दैट द फैमिली हैज टू गो थ्रू. अगर हम क्विकली डिजिटल शिफ्ट का एक पॉजिटिव नेगेटिव देखें, क्या पता इस पे क्वेश्चन ही बन जाए, तो डिजिटल शिफ्ट का अगर पॉजिटिव नेगेटिव देखें हम, ठीक है, तो नेगेटिव में सबसे पहले तो आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन जो इतना कम हो गया है. ठीक है. तो जैसे अभी हम ही प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है. तो मतलब चार दीवार के अंदर बैठ के वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम एक ब्यूरोक्रेट बन जाए. ठीक है. which in मतलब it is not a very
डिजायरेबल सिचुएशन कि लेट्स इमेजिन कि हम 4-5 लोग साथ में मिलकर प्रिपरेशन करते, एक जगह पे रहते, एक फ्लैट में रहते, सो इट वुड हैव बीन मच बेटर टू प्रिपेयर, ठीक है। सो दीज आर सम things, ठीक है। Also there are some physical issues also about digital media, ठीक है। physical issues like eye strain, ठीक है। headache is there, I am also a sufferer of migraine, so headache is something that comes into my mind, ठीक है। ओके, अगेन पॉजिटिव साइड इज ऑल्सो देयर कि डिजिटल टूल्स हेल्प यू मेंटेन अ फैमिली कनेक्शन अक्रॉस डिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि अब ट्रांसनेशनल फैमिली है तो वो तो अब शायद सालों में एक बार मिलेंगे, ठीक है, 2-3 साल में एक बार मिलेंगे, तो इफ देयर इज वीडियो कॉल अपॉर्चुनिटी देन दैट हेल्प्स देम, ठीक है। सो दीज आर सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दैट आई थिंक वी आर able will be able to write easily, ठीक है। another very good keyword that I found was it was given in the Hindu newspaper, ठीक है, helicopter parenting. Now what is helicopter parenting? It basically means that the parents are over involved in a child's life, ठीक है। they constantly monitor, control, make decisions for the child. I remember an year ago or 6 months ago, um, a girl posted on Reddit that she is preparing for JE or NEET something, and her parents has put a CCTV camera into a girl's bedroom, ठीक है। like it is ridiculous, ठीक है। so this is what helicopter parenting is, ठीक है। now this creates a very huge problems, ठीक है। like children develop more anxiety because they are not used to handling situations on their own, ठीक है। सब कुछ उसको spoon feeding किया जा रहा है, ठीक है। they are also not being able to practice the things that are very normal or natural in the growing age, ठीक है। they have curiosity, they have a lot of things that goes on during the adolescent age, ठीक है। बट वो चीज अगर आप हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करोगे दैट विल नॉट बी अ वेरी गुड थिंग। आई रिमेंबर दैट माई पेरेंट्स have never done anything even near to helicopter parenting, ठीक है। अगर ये चीज करते तो मुझे जेई छोड़ के बीए इन सोशियोलॉजी करके यूपीएससी प्रिपरेशन करने का मौका तो नहीं मिलता, ठीक है। बट वन थिंग आई रियलाइज कि सिंस माई पेरेंट्स हैव नेवर बीन स्ट्रिक्ट टू मी, आई शेयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू देम, ठीक है। मतलब मैं उनसे कुछ छुपाता नहीं हूँ, एंड इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ वी फीलिंग और सोशल सिक्योरिटी इज काइंड ऑफ देयर, ठीक है। जैसे अभी मेरा किसी से बात हो रहा था व्हेन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट स्किपिंग दिस ईयर्स अटेम्प्ट, तो वो बोल रहे थे कि पापा को कैसे समझाएंगे, मम्मी को कैसे समझाएंगे। भाई आप देश के सबसे बड़े पोस्ट पे ऑफिसर बनने वाले हो एंड यू आर थिंकिंग कि आपके मम्मी पापा आपको मना कर देंगे या आपको फोर्स करेंगे अटेम्प्ट देने के लिए, तो यू हैव टू लिसन टू देम। सो दिस इज द आयरनी, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप डिस्ट्रिक्ट में कोई डिसीजन लोगे तो पापा से पूछ के लेना फिर। सो दिस इज योर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बेसिकली, ठीक है। So I think this is enough for the topic of family. I also shared some real examples that can be very handy to write in the exam. So yeah, we'll meet on the next video on the topic of marriage, and that is it for the video. Keep smiling.